بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. इसके फॉरवर्ड जिन अखबार ने लिखे वो अगरचे यहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन उनकी तस्वीर और उनके अस्माए गिरामी आप सामने देख सकते हैं। उनमें से दो फॉरवर्ड्स पढ़ने के लिए मैं शाबिर हमारे स्टूडेंट है 3rd ईयर MBBS के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और फॉरवर्ड्स उनके आपके सामने देखें। Good morning and assalamu alaikum. I have a couple of forwards to read. The first one from Mr. Jonathan B. Splicebury.
He is the consultant orthopedic and spinal surgeon, Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, United Kingdom. He says, I have known Mr. Shabir Awan for the last 15 years since he did some of his formative training in the UK. He has now produced a book to help advise colleagues. It is a common sense, now nonsense book which is act as a guide that will navigate its reader through the difficulties of a developing healthcare system. I have enjoyed reading it and feels that the pearl it advises should be general knowledge to the budding orthopedic surgeons. The second forward is from orthopedic renowned surgeon from India, Dr. Satish Chandra Gore, consultant orthopedic spinal surgeon, Ratna Memorial Hospital, Pune, India. He says, Dr. Shabir Awan is a well-known orthopedic spine specialist. He has been active in the field of orthopedics after his advanced training in UK and US. During our training, we came across a lot of opportunities which when we look back after years in nostalgia, we realize we wish if we had taken the chance or taken that decision or put in that extra effort. We cannot turn the clock back, so if someone tells you the secret of achieving success during and then all through your career at the start, then it is welcome. The book is culmination of Dr. Shabir's effort to improve training methods and inputs during training, as well as making trainees mind open to new ways of achieving success in what he or she will do. I am sure this will come really handy to all our future orthopedic surgeons. I wish Dr. Shabir and all his students success in their endeavor. Thank you. Now I'll request Ms. Aisha Izaz to please come to the podium. Two more forwards are there which she has to read. I am pleased to present the foreword by Anthony T. Young, MD, who is an orthopedic spine surgeon at the Desert Institute for Spinal Care, Phoenix, Arizona, USA. According to him, this ambitious monograph by Dr. Shabir Awan is reflective of his dedication to learning for the sake of his patients and offers a personal practical guide to trainees during their informative years. Each of you will be profoundly affected by one or more of your trainers, be it your senior residents or professors. Keep in mind, however, that learning is lifelong, and the most important aspect of learning is to use what was provided during your training is only a foundation for future learning. The second foreword is from Hyun Sun Kim, MD, PhD, who is adjunct professor of Medical College of the Chosun University, Harisaran Spine Hospital, South Korea. He says that as minimally invasive spine surgeon and friend, Dr. Shabir Awan is an expert orthopedic spine surgeon. With the development of science and medicine, the human will live longer life and the spine treatment will be a very important part of medicine. Minimally invasive spine surgery, endoscopic spine surgery and navigated spine surgery will be a major part of spine surgery. In this aspect, Dr. Shabir Awan is an honorary leader and expert spine surgeon in this area. Dr. Shabir Awan's book, The Pearls of Orthopedic Training, will provide a good training course and good guideline for orthopedic training to the trainee doctors. Thank you, Aisha. मतलब ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं जो ऑथर ऑफ द बुक हैं उनको स्टेज पे बुलाऊं, एक वाक़या मैं आपके गोश्तगुज़ार कर लेता हूं, मगर उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑथर ऑफ द बुक है उनके उम्र जो है तो 50 साल है। एक क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए थे और उस्ताद मोहतरम जो थे उनको थोड़ी सी कभी कभी उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उनको सवाल ऐसे करते थे कि उनको समझ ना आए, मगर वो उसके बावजूद बोलते नहीं। तो उस्ताद साहब ने एक सवाल किया कि बेटे इधर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हर 10 मिनट के बाद एक ट्रेन आती है, उससे 100 बंदे उतरते हैं और 150 बंदे चढ़ते हैं और 10 मिनट खड़े होने के बाद ये 40 मील की घंटा की रफ्तार से ये चली जाती है उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के, तो मेरी उम्र कितनी है? तो बच्चे बड़े सटपटा गए और फिर उन्होंने आखिर एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। तो उसने उस्ताद ने पूछा कि अच्छा बेटे मेरी उम्र कितनी है? तो बच्चे ने कहा कि जी आपकी उम्र 50 साल है। जवाब तो ठीक था, लेकिन उस्ताद ने फिर पूछा कि बेटे आपको कैसे पता चला कि मेरी उम्र 50 साल है? तो उसने, क्योंकि मैं तो जो सवाल किया था कि एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक गाड़ी आती है, 10 मिनट खड़ी होती है, 100 बंदे उतरते हैं, 150 बंदे चढ़ते हैं
10 मिनट खड़े होने के बाद ये प्लेटफॉर्म छोड़ देती है और 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो मेरी उम्र कितनी है? मुझे ने कहा सर असल में बात ये है कि हमारे मोहल्ले में एक शख्स है, सब कहते हैं कि ये आधा पागल है, उसकी उम्र 25 साल है, तो अगर 25 साल वाले की आधा पागल हो सकता है तो आपकी उम्र 50 साल है। तो कुछ लोग यकीनन मुआशरे के अंदर ऐसे होते हैं कि जो एक डगर से हट के बात करते हैं और डगर से हट के काम करते हैं। यकीनन ये एक पहला तारुफ है उनकी काविश का कि जो फलसफा ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग की सूरत में हमारे सामने है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर शबीर अहमद साहब से को स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की इस नशिस्त के बाद से आपके सामने बात करें। थैंक यू सलाउद्दीन। इन्होंने सही कहा, मुझे लोग पागल ही कहते हैं क्योंकि मैं इस सिस्टम में फिट नहीं हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे साथ नहीं जाना है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा न हो तो ये मट्टी बहुत ज़कीर है साकी। आज का दिन मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जिस तारीखी और मिसाली इदारे में 32 साल पहले मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से दाखिल हुआ था, आज उसी इदारे में अपनी छोटी सी काविश के मुसन्निफ़ की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। अपनी पोस्ट ग्रेजुएट तालीम के सिलसिले में मुझे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, मिस्र, दुबई, कोरिया और आशिया के मुख्तलिफ अस्पतालों और इदारों को देखने का इत्तफाक हुआ। तो दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश मैं ये किताब लिख सकूं जिसमें वो तमाम अच्छी और बुरी बातें हों, अच्छी बातें अपनाने के लिए और बुरी बातों से बचने के लिए। कहते हैं कि जहां आपको कोई अच्छी चीज़ मिले या अच्छी बात नज़र आए उसे फ़ौरन अपना लो, क्योंकि वो मुसलमान की खोई हुई विरासत है। गोया हम इन तमाम इदारों की तमाम अच्छी बातें यकजा करके कह सकते हैं कि आँच खुबा हमादारत पाकिस्तान तनहादारी। जनाब सदर, बदकिस्मती से हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में ट्रेनी सबसे मजलूम मखलूक है, जो कि ट्रेनर और ट्रेनिंग इदारों के रहम करम पर है। हालांकि वो इस ट्रेनिंग बसात का सबसे अहम मोरा है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होते तो न ट्रेनर की ज़रूरत थी और न ट्रेनिंग इदारों की। पूरे पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर ऐसे ट्रेनिंग इदारे होंगे जो ईमानदारी, दयानत, मेहनत और शफ़क़त के साथ अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वरना अक्सरियत खुद रो पौधों की तरह कुएं के मेंढक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि फ़नी दरिया में दाखिल होते ही जालिम मौजों के थप्पड़ों का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। जनाब सदर, इस ज़माने में एक जामे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम मुरतब किया जा सकता है जिसका सेरा KPK के हिस्से में आ सकता है, अगर आप और अरबाब इख्तियार इस पर तवज्जो दें, जो दूसरे सूबों के लिए मशअल राह होगा। चूँकि ये मेरे बस या किसी एक शख्स की बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि अपनी तमाम तवज्जो ट्रेनिंग को ग्रूम करने में सर्व करूँ और ट्रेनिंग ट्रायंगल यानी ट्रेनिंग, ट्रेनर और गवर्नमेंट बॉडीज़ को ऐसे मुफीद मशवरे और टिप्स दूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस निज़ाम को अच्छा कर सकें। आइंस्टाइन ने कहा था, आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। मेरी ये किताब भी किसी सर्जिकल टेक्निक या प्रोसीजर या बीमारियों की तस्वीर के बारे में नहीं है, क्योंकि इस पर सैकड़ों क्या हज़ारों किताबें मौजूद हैं, बल्कि मेरी ये कोशिश ये है कि ट्रेनिंग को एक ऐसा माहौल फराहम किया जा सके जिसमें वो फ्रेश और खुले ज़हन से अपने ट्रेनिंग मुकम्मल कर सके और न सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ट्रेनर बन सके बल्कि एक अच्छा इंसान बन सके। मैंने इस किताब में हर उस ताल्लुक रिश्ते को मौजू बनाया है जो कि ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लाइफ पर असरअंदाज हो सकता है, ख्वाह वो आपका ख़ानदान, दोस्ती यारी, गेट पर खड़े होने वाले चौकीदार, वार्ड स्टाफ, कोलीग, सीनियर डॉक्टर्स, फिजराना शफकत या सख्त दी प्रोफेसर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरा फोकस उस रिश्ते पर ज़्यादा है जिससे हमारा रिज़्क वाबस्ता है, और वो है हमारा मरीज़। अगर हम अपने मरीज़ से मुखलिस हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत और हमारे हाथ में शफा डालेगा। इसलिए अ पेशेंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट के असूल को अपना कर अपनी ज़िंदगी का, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का नस्ब-ए-आम बनाएं। इसी तरह मैंने हर उस छोटे बड़े अमल को मौजू बनाया है जो कि एक डॉक्टर की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लाइफ पर असरअंदाज हो सकता है, ख्वाह उसका लिबास, जिस्मानी सफाई, तर्ज तखातब, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल एक्टिविटीज़, इम्तिहान की तैयारी, तफरीह, स्टडी का तरीका ही क्यों ना हो।
کہنے کو تو اس کتاب کا نام دی پلز آف آرتھوپیڈک ٹریننگ ہے، لیکن یہ نہ صرف سرجیکل بلکہ ہر اسپیشلٹی کے لیے یکساں کارآمد اور لازمی ہے، بلکہ میں تو کلینکل میڈیکل اسٹوڈنٹس سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اسے بھی پڑھیں تاکہ وہ آنے والے وقت سے پہلے تیار ہوں۔ پروفیسر اعجاز کھٹک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کتاب نہ صرف ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے بلکہ اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے جو کسی بھی ادارے سے منسلک ہو، خواہ وہ ٹیچر ہو، بزنس مین ہو یا آفس ورکر ہو، کیونکہ اس میں وہ تمام ٹپس موجود ہیں جو کسی بھی انسان کی اخلاقی، مذہبی اور فنی مہارت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ یہ کتاب ہماری بنجر، خشک مگر زرخیز تربیتی زمین پر بارش کا کام کرے گی اور ہرے بھرے سرسبز گلستان کا منظر پیش کرے گی۔ نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ السلام۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اعجاز کھٹک صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس نشست کے حوالے سے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں۔ پرنسپل کھیبر میڈیکل کالج جناب نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر صحت شاہرام ترقی صاحب، چیف ایگزیکٹو عنایت شاہ روانی صاحب، ڈین پی جی ایم آئی پروفیسر ریاض انور صاحب، صاحب کتاب شبیر اوان صاحب، معززین شہر، فیکلٹی ممبرز، خواتین و حضرات، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ منسٹر صاحب، میں نے بھی سوچا تھا کہ شبیر اوان صاحب کی طرح لکھی ہوئی تقریر پڑھوں، کیونکہ یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے کہا کوئی چیز رہ نہ جائے، لیکن پھر مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آیا اور میں اس سے تو بتایا ہو گیا کہ ایک شخص نے ایک جلسے میں تقریر پڑھی، جب نیچے آیا تو اپنے سیکرٹری کو کہا کہ بدبخت، میں نے 15 منٹ کی تقریر کا کہا تھا، تم نے 1 گھنٹے کی لکھ دی۔ اس نے کہا لکھی تو میں نے 15 منٹ کی تھی، لیکن آپ 3-4 فوٹو اسٹیٹ اس کی لے گئے۔ Sir, Khyber Medical College has given birth to all the medical institutions of this province. اور یہ میرا کمال نہیں ہے کہ اس کا یہ معیار ہے، اگر اتفاق سے مجھے ایسا نالائق بھی اس پہ مسلط ہو جائے تو یہ اس کی زوردار فیکلٹی اور اس کے ٹاپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ادارے کا نام ہے اور اس کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ شبیر اوان صاحب ہمارے کالج کے گریجویٹ ہیں اور انہوں نے یہ کاوش کی ہے۔ اس کتاب میں نے 3 دفعہ یہ کتاب پڑھی ہے اور پہلی میڈیکل کتاب ہے کریس اتھارٹی کی سرزمین میں لگی جو میں نے 3 دفعہ پڑھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو میڈیکل رائٹنگ، ریسرچ میتھڈالوجیز، کمیونیکیشن سکلز، نارملی آپریشن تھیٹر میں جو آپ کو ایمرجنسی کی سچویشن ایسی نایاب چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں جو کہ عام آدمی کے ذہن میں تب آتی ہیں جب اس کو ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے۔ شبیر اوان صاحب آپ سے ایک گلہ بھی ہے، آپ کہاں صبح شام پریکٹس میں الجھ گئے، آپ کو تو کسی اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں، میں نے اس لیے کہہ دی کہ غلام محمد قاصد نے کہا تھا کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں کھانے کا پتا۔ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نئے نشیلے تھے۔ ہم نارملی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ابھی ماڈرن آرتھوپیڈک اس کے ساتھ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم سیاسی اس پہ دیکھیں وزیر صاحب تو ہم سنتے ہیں کہ فلانی ملا مضبوط ہے، سیاسی طور پہ کہتے ہیں ملا تڑشتا، تو ملا کی اہمیت یا اسپائن، کیونکہ ان کے کافی پریفیس جو ہیں وہ فاروق وجد ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں اسپائن سرجن نے، تو اسپائن کی اہمیت ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہے، معاشرتی طور پہ کہتے ہیں ملا مضبوط ہے۔ اور اگر آپ پشتو کے اس میں آپ دیکھیں تو پشتو کے ایک پرانا ٹھپا مجھے یاد آتا ہے، آپ تو آج کہہ رہے ہیں کہ وزن اس طریقے سے مت اٹھاؤ، زیادہ مت اٹھاؤ، جو گدر تزام را پس راشا منگی میں دودی نرے املا میں مزے۔ بہت شکریہ کی تقریر اور اس کا فن یقیناً اعجاز صاحب کی گرفت میں رہتا ہے۔ جس شعر کی میں بات کی اس کتاب کا نام ہے غلام محمد قاصد صاحب کے 8واں آسمان کی نیل ہے۔ دوبارہ میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے اس کالج کا جو ایک تخصیص ہے اس کا ایک امیج ہے وہ دوسرے کالجز سے دوسرے لوگوں سے اس لیے الگ ہے کہ یہاں کے گریجویٹس اپنی ایک مثال رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں زیادہ طور تو وہ یہ تھا، ایک گھر کے اندر دسترخوان بچھا ہوا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، امی بیٹھی ہوئی ہے، ابو بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بچے نے ابو سے پوچھا کہ ابو ہم اس دنیا میں کس طرح آئے؟ تو ابو کہنے لگے کہ بیٹے اس طرح تھا کہ اس دنیا کے اندر بندر تھے، ان کی نسل چلی تو بالمانس آئے، بالمانس سے پھر عدلی انسان آیا، انسان کی نسلیں چلتی نہیں، میرا خاندان آیا، پھر میں آیا، اس کے بعد آپ آئے۔
तो वही बच्चा अम्मी की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि अम्मी हम इस दुनिया में किस तरह आए, तो अम्मी कहने लगी कि बेटा इस तरह था कि हज़रत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उनकी नस्ल चली, फिर नस्ल के बाद नस्ल इंसानों के ख़ानदान आते गए, मेरा ख़ानदान आया, फिर मैं आई, उसके बाद आप आए। तो वो बच्चा अम्मी को कहने लगा कि अम्मी वो तो कह रहे हैं कि हम बंदरों की औलाद हैं, तो आप कह रही हैं कि हम हज़रत आदम की औलाद हैं। तो अम्मी कहने लगी वो अपने ख़ानदान की बात कर रहे हैं। बस साथी नज़ात, मैं अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अनवर, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक किताब की तकरीबन नुमाई हुई, डॉक्टर खालिद वासिल असदी, वो मदीनतुल मुनव्वरा की उस खिदमत पर मामूल हैं कि जो खिदमतगारान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी खिदमत वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा इस्लामी सकाफत का दारुल खिलाफत के हवाले से एक किताब तहरीर की, और वो साहिब किताब थे। ये डॉक्टर रियाज अनवर को एजाज़ हासिल हुआ कि इनके दौलत खाने पर उन्होंने 2 या 3 लाख रुपया। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अनवर बहैसियत डीन BGMI इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं उनसे मुतलबिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आज इस नशिस्त के हवाले से अपने ख्याल आपके सामने रखें। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अनवर साहब। Thank you very much, Saladin. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Health, Principal of Khyber Medical College, Dr. Shabir Awan, Chief Executive, Khyber Hospital, Awan Sahib, Principal, Girls Medical College, Abid Sahib, my respectable citizens of Peshawar, honorable members of the staff, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As Dr. Ijaz said, that Khyber Medical College has taken a pride. It's a mother institution. If Khyber Medical College was not here, there won't be any other medical college in this province. So we should say proudly that we are from Khyber Medical College and it is the mother institution. Minister said, put every effort to strengthen this college, bring every facility, the latest facility in the world which can strengthen this medical college. The same way, Professor Shabir, I would like to congratulate you on writing such an exciting book, which being worked in Indian for 10 years. And when I read that book, it just put me back to the track that I'm working in theaters, I'm working in boards. Even he has concised to a point that how to carry a pen, how to write a prescription, and how to erase the prescription that has been written. It was a very good effort being made by Professor Dr. Shabir. I would like to congratulate you. As far as postgraduate training is concerned, Professor Shabir has said, I would like to bring to Minister Sir notice as well, because he's here for the first time with us. Postgraduate Medical Institute was established in 1984, when there were only 9 trainees were involved. Professor Shabir has said that there is deficiency of the trainees and the institutes. Dr. Shabir, we have 1,700 trainees on the postgraduate medical institute strength now. It is the government which is increasing the number every day. And we have extended all these specialists to the 24 districts of KPK. That is another pride for the postgraduate medical institute. You mentioned so that, sir, Minister Sir, we offer specialties of all training facilities for general medicine, general surgery, orthopedics, gynae obstetrics, pediatrics, eye, ENT. And apart from that, Minister Sir, I would like to mention this thing in front of you, that apart from that, PGMI, when it came with a vision that would prove to be one of the best in providing the super specialty, like cardiac surgery, we train in KPK, the candidate doesn't go out, the patient doesn't go out, neurosurgery, thoracic surgery, endocrinology, and many more super specialty which came through the postgraduate medical institute with the collaboration of the examination body is CPSP. Unfortunately, the people who are sitting here, they give all credit to CPSP, where the government of KPK or the previous governments have taken this lead in establishing postgraduate medical institute, giving them funds to postgraduate medical institute, giving the stipend to the TMOs of the KPK, 1,700 students, 1,700 TMOs on the list now, and every TMO gets 41,000 rupees stipend every month.
and my honorable Special Secretary Health is sitting here as well, and you'll agree with me that it's a very difficult job. Nowhere in Pakistan, I repeat my words, that this big stipend to 1700 trainee medical officer is given. That is only credit goes to the KBK government. Sir, this was the past. The future vision is we are going to establish, because that's supposed to be graduate medical institute, and we will need your help. We are going to establish the skill labs. It's a concept of skill labs. No more experiments. My students, my sons, my daughters are sitting here. No more experiments on the patients. It will be skill labs where there will be dummies, and you will be allowed to operate on those dummies. And when you are certified that you are allowed to touch the patients. Sir, this is has already allocated in the ADP 25 crore rupees of funds, and which PC1 will be approved very soon, and inshallah in next 3 to 4 months time we will start that building. So Shabir sir, this is answer to your question. We are not lagging behind in any way. KBK has taken the lead in establishing every specialty in KBK, whatever the possible. And I wish that, and I welcome you to the medical education department. Please come, train our junior faculty members, train our doctors. You will be always welcome. With the permission of the government, the ministers are sitting here. You are son of the soil, and we will welcome you. For students and trainees who work, I think this book has to be read again and again. Read this book again and again. I don't know the price of this book, but I think Shabir has quoted a very basic principles of surgery, how the patient is managed, how you conduct with your staff, how you conduct with your colleagues, why to wear white overalls. I think that culture is going away. I don't know whether it is right or wrong, because the GMC has declared that the white coat contains many bacteria, so don't put it on. But he also very precisely said what is the importance of a name tag, what the doctor should carry in his pocket. So that's a good effort. I think we should read this book and try to practice it in our own hospitals. With these remarks, I would like to thank the organizers, Sir sir, and Professor Ijaz, who has invited me to say something. So I would like to say thanks to them and request the Honorable Minister to give further strengthen these institutions, the government institutions, because we have to compete with the private institutions. And I, as a cardiac surgeon, professor of cardiac surgery, proudly say that we can compete with any private institution in KPK, because cardiac surgery is the most sensitive field, it's the most expensive field. And I proudly say that whenever we go to the government, we bang their doors, they always give surplus funds for cardiac surgery, cardiology, neurosurgery. So we are not lagging behind in technology. We have the best technology than any private sector hospitals. And I am thankful to the government for that. And with these remarks, I would like the Minister Sir to extend the same hand again and again to these institutions. Thank you very much. मैं मोहतरम जनाब डायरेक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँ प्रोफेसर डॉक्टर इनायत रोहानी साहब से कि वो आज की इस मजलिस के हवाले से एक शीट मोहतरम मेहमान खुसूसी की खिदमत में पेश करें, जो उनको इस बात की याद दिलाएगी कि वो हमारे इस कॉलेज के अंदर तशरीफ लाए। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर इनायत रोहानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ये शीट जनाब शहराम खान तरकई को पेश करें। दूसरी शीट प्रोफेसर डॉक्टर इनायत रोहानी साहब से गुजारिश है कि वो ऑथर बुक को पेश करें। डॉक्टर शबीर और अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम शहराम खान तरकई साहब से, जो सीनियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के तशरीफ लाए आज की नशिस्त के हवाले से अपनी रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Principal Saab, Chief Executive Saab, Dean Saab, Dr. Shabir Saab, all the honorable professors, doctors, students, media, assalamu alaikum ji। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शबीर साहब का, मतलब मेहनत इन्होंने की है
and me as a minister I have come to just इनके मेहनत के साथ जिन्होंने जो मेहनत की है उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनके इस पूरे प्रोग्राम के एक हिस्सा बने. तो थैंक यू फॉर मतलब इज्जत देने की और दावत देने की, बताने की, बुलाने की. लंबी छोटी बात मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं. टेक्निकल लोग सारे बैठे हुए हैं, आई एम नॉट टेक्निकल एट ऑल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाता नहीं क्योंकि सोचता हूँ चला गया तो कुछ ना कुछ निकालेंगे कि ये मसला हो गया. बहरहाल आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम. फॉर मी working as a health minister, it's an honor for me, seriously. I thank you very much. Dr. Saab, Dr. Shabir Saab, मैं इल्म कहते हैं कि वही है जो आप सीख के दूसरों को पास ऑन करते हैं. और this is something wonderful that you have done. We appreciate the work that you have done. Support भी रहेगी. और आपके लाइन में तीनों बैठे हुए डॉक्टर साहब, इन्होंने आपको रिक्वेस्ट भी की है और मुझे भी कहा है कि डॉक्टर साहब को कहें कि फिर हमारी सपोर्ट करें. और आप जैसे लोग देखें इस तरह आएंगे तो इन बच्चियों को आप सिखाएंगे, मतलब कहीं और से तो लोग नहीं आएंगे, कहीं बाहर से कोई नहीं आने वाला. तो आप प्रैक्टिस भी करें अपनी, लेकिन अब हर बंदे का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को भी मतलब है कुछ सिखाएं. तो उसके लिए टाइम निकालें और हम शुक्रिया भी आपका अदा करेंगे. और थोड़ा सा बर्डन आएगा लेकिन सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, फ्यूचर को हमारे फ्यूचर है इनको चाहिए. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.